Hello, welcome to English. So we are meeting once again. How are you all? Good evening. A very warm good evening to all of you. As usual, let's just wait for a few seconds for all my dear learners to connect. Right. Good evening. Yes. I'm just waiting for all of you to connect. So, how are you all? I'm sure you all might have started studying. Start working hard now. So, we are about to start with the poem number 3 of your syllabus, and the title of the poem is Keeping Quiet. I'm sure you all must be missing your classrooms. What do the teachers often repeat? Keep quiet. And you all go on making noise, and the teacher has to once again say, keep quiet. And this is what the poet is also saying. He's asking us to keep quiet. Yes, the title of the poem is Keeping Quiet, and it is written by Pablo Neruda. So I always tell you to remember the poet's name, the poem, and who has written the poem. So that must be connected so that you all know. Anytime anyone asks you which is the poem, you should know it. You have just 5 poems in your syllabus. So it's very easy to remember just 5 poems and their poets' names. Isn't it? Yes, very nice. Farat is also there. Very good. Good, Farat. I'm happy that you have also joined us. So, what is this poem about? See, human beings are always in a rush. We are always running around here and there, and just do not sit for a moment and think. So, the poet wants us to introspect. What is this introspect word? Hindi में, if I tell you the meaning, is introspection means Atma Chintan. And there is one more word, retrospection. Retrospection means to think over an issue again and again. पुनरावलोकन, बार बार उसको देखना कि क्या सही है क्या गलत है. So he wants us to introspect in this poem. है ना, जब हम कुछ भी गलत हो जाता है और उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं कि आज क्या हुआ, what happened today, what went wrong. So many times when we think over it silently, we come to know that this is what happened, this is the point where I was wrong, I should not have done this. तो ये सब कैसे पता चलता है? When you sit and introspect silently. Introspection नॉइज में तो नहीं हो सकता.
बात करते हुए भी नहीं हो सकता. Introspection can only be done when you sit silently for some moments and then only you can think over it, right? So basically, the poet wants all the human beings to sit silently for a moment and just introspect. So human beings will come to know what wrong they have been doing, right? So let's start with the poem with an introduction. Yes, let me share screen with you all. Yes, just a moment, learners. I'm just connecting the screen with you all. Right. So let's know about the poet first. This poem, Keeping Quiet, has been written by Pablo Neruda. Originally, this poem was written in Spanish, and this poem became very famous. So it was then translated into English. पहले स्पेनिश में लिखी गई और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. राइट. नाउ दिस पब्लो नेरूडा वाज हिज पेन नेम. पेन नेम क्या होता है? लेट मी टेल यू. Like my name is Nirupma, and for writing I use some other name for any reasons. Like I use Minu name for writing. Now that becomes my pen name. So this was the poet's pen name, which he later legalized. मतलब उन्होंने इसी नाम को adopt कर लिया, right? And he is such a famous poet. He has also won Nobel Prize. Nobel Prize आप जानते हैं ना, सबसे बड़ा प्राइज होता है, और वो लिटरेचर के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है. Now, there was one very special thing about this poet. He used to write with green ink. Like for him, it was a symbol of hope and desire. That was very special of him. His writings are very simple, beautiful, and soul searching. Soul searching means कि आप खुद ही सोचते रह जाते हो कि वाकई में इतना डीप मीनिंग वाली पोएम पोएट ने लिखी है. और दिस पोएम इज ऑल्सो वेरी सोल सर्चिंग, राइट. नाउ द पोएम कीपिंग क्वाइट is based on introspection and retrospection. मैंने ये दोनों वर्ड्स अभी आपको क्लियर किए. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मचिंतन एंड रेट्रोस्पेक्शन मीन्स पुनरावलोकन, बार बार किसी बात को समझना, जांचना. And the poet wants us to maintain peace and silence. ये poet हमसे चाहता है, peace and silence. Now let's go through the summary quickly. In the poem Keeping Quiet, the poet asks all human beings to count from 1 to 12. 1 to 12 क्यों कहा? Because the number 12 actually represents the hours of the day and also the months of the year. There are 12 hours in a day and 12 hours in the night, right? In the same way, there are 12 months of the year, right? So poet has taken number 12 as symbol, right? The poet wants all of us to stay quiet and still, not to make movement. चुप भी रहे और movement भी नहीं करें. He requests us all not to speak at all because he feels that languages create barriers amongst people. He says, do not speak in any language. Languages, according to him, create barriers. Like I'm speaking in Hindi, and some other person is speaking English. The third person doesn't know Hindi and English, so he speaks
in Spanish. So that becomes a barrier, है ना, हम communicate ही नहीं कर पा रहे. So he says, do not speak in any language, right? If this happens for a moment, it will be a very special and wonderful moment. So he says, if this happens for once, if all the human beings on the earth do not speak for a moment, that will be a very wonderful, a strange, an unusual, a special moment. It will truly be an experience of its kind. It will be a wonderful experience. It will be a very new experience. The poet says that in this moment of inactivity, now, when we are inactive, we are not making any movement, what will happen? The fisherman, he gives certain examples. The fisherman, अब फिशरमैन कौन होते हैं? मछुआरे. What do? They catch fish, they catch whales, है ना, शिकार करते हैं उनका, right? They will not harm them. The salt gatherers will not hurt their hands, and the people who are busy in destroying the nature will adopt new approach towards life. अब सॉल्ट गैदरर्स कौन से? सी बीचेस पर लोग, वहां सॉल्ट बनता है, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं. तो आप सोचिए, सारा दिन सॉल्ट में हाथ रहेंगे, तो नमक में हाथ रहेंगे, तो व्हाट विल हैपन? योर हैंड्स विल गेट हर्ट, है ना. सो दे विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स, एंड पीपल हु आर बिजी इन डिस्ट्रॉइंग द नेचर, वो भी एक नई अप्रोच से देखेंगे. The humans who have always been busy in preparing wars and victory based on deaths of innocent ones will join their enemies and will stand united with them. He says, if we all unite, what will happen? People who are busy in doing wrong things, in harming people, those who always think of something wrong about human beings, other human beings, they will stop for that moment and will stand with others. So we all will be together. No one will harm himself or any other person. कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. This moment will lead to introspection, as the humans will retrospect their acts and realize the results of their deeds. अब ये जो moment होगा, special moment, हम क्या करेंगे? वी विल इंट्रोस्पेक्ट, हम आत्मचिंतन करेंगे. और उस आत्मचिंतन में हम क्या करेंगे? अपने कार्यों को रेट्रोस्पेक्ट करेंगे, उनको दोबारा से सोचेंगे कि व्हाट हैव वी बीन डूइंग. और तब ये रियलाइज करेंगे कि जो हमने किया उसका रिजल्ट क्या हुआ, राइट? Here the poet clarifies what his idea is. क्या आइडिया है उसका ये सब करने के पीछे? He says कि मैं जो कह रहा हूं कि चुप हो जाओ, इनएक्टिव हो जाओ, मूवमेंट मत करो, इसको गलत बिल्कुल मत समझना. मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मृत्यु से आप इसको जोड़ दें, मौत से इसको आप जोड़ दें, डेथ से कनेक्ट कर दें. Do not at all connect it with death. What he wants is that there should be no war, because he doesn't want to see trucks laden with dead bodies of soldiers. जब भी war होगा तो क्या होगा? Soldiers of both the sides, both the parties will die in numerous numbers. So he doesn't want that. Here he promotes his belief in universal brotherhood. यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या होते हैं? भाईचारा. यूनिवर्स, ब्रह्मांड के भाईचारे की बात करता है. ही टॉक्स अबाउट all the human beings on the earth. The poet further adds that all are working continuously to achieve their goals. सब लोग अपना लक्ष्य पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं. Death threatens them and the fear forces them to work endlessly. So they are afraid of death, right? And
दे हैव सर्टेन फियर्स, तो उसके लिए वो लगातार लगे रहते हैं. दिस मैट्रेस हैज टू बी पॉज्ड. ये जो भागा दौड़ी है बिना रुके, इसको रोकना होगा. पॉज, जानते हैं ना पॉज का बटन कब हम दबाते हैं? जब थोड़ी देर के लिए किसी चीज को रोकना. सो ही वॉन्ट्स अस टू रिलैक्स एंड ओवरकम द फियर ऑफ डेथ, कि थोड़ा सा चैन से बैठो और मौत के डर पर काबू पाओ. If we all remain quiet for a while, we will realize the purpose of our lives. कहते अगर हम एक पल के लिए शांत बैठे तो हमें अपनी लाइफ का पर्पस क्या है वो समझ में आएगा. भागना दौड़ना पागलों की तरह से, सेल्फिश एंड्स, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, हमें समझ आ जाएगा ये सब बेकार है. Just as the nature undergoes a rebirth when it seems everything is over with change of seasons. कहते जैसे जैसे कि प्रकृति, he says कि nature teaches us a very good lesson. जैसे नेचर में रीबर्थ होता है ना, जमीन जो कि बंजर पड़ी हुई होती है, हमें समझ ही नहीं आता कि कब उसमें से दोबारा अंकुर फूट जाता है और लाइफ निकल कर आती है. जैसे ही सीजन चेंज होते हैं, है ना, बहुत गर्मी है, जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी है, थोड़ी सी बारिश हुई, उसी जमीन में से कैसे छोटे छोटे हरे हरे पौधे आपको नजर आने लगते हैं. इन द सेम वे rebirth of human soul will be possible when he keeps quiet. So see, um, what a soul searching poem it is, है ना, कि आप अपनी आत्मा से सोचते हैं कि क्या इतना डीप मीनिंग वाली पोएम पोएट ने हमसे कही है. कि ही सेज, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यू कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट एंड देयर विल बी अ रीबर्थ ऑफ योर सोल. At the end, poet once again says, now I will count till 12 and asks everyone to remain quiet when he leaves. I will count up to 12, and this counting till I count, you just keep quiet and then I will go. I hope the poem is summary तो clear हो गई कि क्या कहना चाहता है. Now we'll just go through the poem. पोएम आपको अब बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे because you know an overview of the poem, right? Let's go through the poem now. So, ready? Okay, let's start reading the poem. I'll read it stanza by stanza because poem में कई stanzas हैं, तो एक एक stanza को हम समझते जाएंगे. Now we will count to 12 and we will all keep still, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Very simple point. कोई word ही difficult है, otherwise all the words are very simple and clear. He says, now we will count to 12 and we will all keep still. Let me tell you. Now he says, we will all count to 12. Okay. ये तो बहुत क्लियर है कि हम सब 1 2 3 4 अप टू 12 काउंट करेंगे. और जो ये काउंट करना है 12 तक, उतनी देर के लिए हम सब बिल्कुल स्टिल, विदाउट स्पीकिंग, मन में काउंट कर रहे हैं. ओके, एंड वी आर नॉट मूविंग. Because he says, for once on the face of the earth. For once matlab at least one time on the face of the earth, the complete earth, let's not speak in any language. He says nobody on the earth should speak because any language, he says, that no one on the earth, whatever language you speak, you have to keep quiet and still. Then he says, let's stop for a second and not move our arms so much. Simple है बिल्कुल. हम क्वाइट रहें, स्टिल रहें
एंड लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. कहते अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपने हाथ ना हिलाएं, है ना. लेकिन आर्म्स, यहाँ पर आर्म्स वेपन्स के लिए भी यूज हुआ है कि व्हेन वी फाइट, when we quarrel, we use weapons, we use arms. So he says, do not use them also because you are keeping still. It would be an exotic moment without rush, without engines. Exotic means कई मीनिंग्स इसके हम निकलते हैं. स्ट्रेंज, अनयूजुअल, पीसफुल, वंडरफुल. कितना हम इसे कहें तो कितना स्ट्रेंज मोमेंट होगा, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं. कितना अनयूजुअल मोमेंट होगा, बिकॉज इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं. कितना वंडरफुल मोमेंट होगा, बिकॉज इससे पहले तो ऐसा हुआ ही नहीं. Why will it be a strange, a wonderful, or an unusual moment? Because without rush, without engines, rush is that symbolizes running, mad running about things. क्योंकि आप देखिए सब पागलों की तरह भागते दौड़ते रहते हैं. इसका एक एग्जाम्पल दूं. यस, आपने रेड लाइट्स में देखा है, कोई रुकने को तैयार होता है जब रेड लाइट हो? रनिंग अराउंड, चाहे घर जाकर बैठेंगे ही, है ना, घर जाकर सोएंगे ही, पर रेड लाइट पर कुछ सेकंड्स के लिए भी रुकने को तैयार नहीं. So this is what he says, don't rush madly, don't run around madly without engines. He says all machines, all vehicles to be stopped, there should be no noise. If we do this, what will happen? We would all be together in a sudden strangeness. मतलब एक अजीब तरह से हम लोग सब इकट्ठे होंगे. कैसे इकट्ठे होंगे? क्योंकि उस एक मोमेंट में हम सब एक ही काम कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? वी ऑल आर क्वाइट एंड स्टिल, राइट. इस तरह से चाहे यूएसए में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे स्पेन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन सब लोग इकट्ठे होंगे. तभी उसने कहा कि एक स्ट्रेंज तरीके से हम लोग अचानक से सब इकट्ठे हो जाएंगे. Then he says, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. कहते कि ये जो एक मोमेंट होगा, उस मोमेंट में बिकॉज विल नॉट बी मूविंग, हम लोग स्टिल रहेंगे ना, तो उस मोमेंट में क्या होगा? जो फिशरमैन है वो फिश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. देखिए ये बड़ा सिंबॉलिक है. पोएट बड़े तरीके से चीजों को हमें समझा रहा है. He says कि जो मैन है वो नेचर को बहुत डिस्ट्रॉय करता है ना, स्पॉइल कर दिया मैन ने नेचर को. तो ही सेज कि सबको, लाइक फिश आल्सो हैज टू लिव, है ना. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पर, दे ऑल हैव द राइट टू लिव. सो फिशरमैन फिश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और बहुत से ऐसे काम होते हैं ना जिससे हम खुद ही को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं, है ना. तो द मैन हु गैदर्स सॉल्ट विल नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. he will not hurt his hands. जिस काम से वो अपने हाथों को नुकसान पहुंचाता है, for a moment he will not hurt his hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Now, who prepare green wars? Man. Man is always busy in becoming powerful, then more powerful. Everyone wants to attain power. So for that, you fight wars. He says that those people who are busy thinking about अब किसका नुकसान करें, अब किससे लड़ाई करें, है ना, ऐसे countries are also busy in thinking about fighting wars, और अपने कंट्री को बड़ा करने के लिए
लड़ाई करते हैं, एंड व्हाट डू दे गेट? विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स। जीत भी गए तो सोल्जर्स तो बचे ही नहीं, ना इस पार्टी के बचे ना इस पार्टी के बचे। तो when we will keep quiet for a moment, what will happen? These people will also sit still for a moment with their brothers in the shade, with all the other human beings doing nothing. They will also not think of harming people, not think harming humanity or the nature. ठीक है? नाउ ही सेज, इतना कुछ पोएट ने हमें बताया, नाउ ही सेज कि देखो मिसअंडरस्टैंड मत करना मुझे। ही सेज व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जो मैं कह रहा हूं कि आपने यू हैव टू कीप क्वाइट, यू हैव टू सिट स्टिल, डोंट कंफ्यूज इट विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिव, अब इनएक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी। एक्टिविटी समझते हैं? कोई एक्ट करना, कोई काम करना। इनएक्टिविटी इज द ऑपोजिट ऑफ एक्टिविटी, माने कुछ भी नहीं करना। ही सेज डोंट कंफ्यूज विद दैट। टोटल इनएक्टिविटी क्या हो जाएगी? इट विल बी डेथ। टोटल इनएक्टिव हम कब होते हैं? माइंड एंड बॉडी, ब्रेन एंड बॉडी कब इनएक्टिव होता है? when we die. So he says do not confuse. Life is what it is about. Life is what it is about. If we were not so single minded and keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. He says, if we were not so single minded. सिंगल माइंडेड उसने क्यों कहा पोएट ने? बिकॉज मैन इज वेरी सेल्फिश, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। ये काम करूं तो मुझे क्या फायदा होगा? नेचर डिस्ट्रॉय होती है, हो जाए, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा, है ना? एनिमल्स को मैं नुकसान पहुंचाता हूं, हो जाए, एनिमल्स ना बचे, टाइगर्स ना बचे, कोई बात नहीं, मुझे तो पैसा मिल जाएगा ना। So he says, if we were not so single-minded, means we were not so selfish, we were not always thinking about ourselves, and keeping our lives moving, and for once could do nothing. कहते कि एक बार हम इतने selfish ना बने and कुछ एक moment के लिए कुछ ना करें, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. कहते कि शायद, perhaps means शायद, this silence, ये साइलेंस क्या करेगी? हमारी जो मैड रनिंग है, पागलों की तरह से भागते रहना है, उसको इंटरप्ट करेगी, उसको शायद बीच में एक ब्रेक लगा देगी। और क्योंकि हम लगातार दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो हम भूल ही गए कि हाउ टू स्टे हैप्पी। तो एक उदासी जो भर गई है, शायद उसमें भी ब्रेक लग जाएगा, उस सैडनेस में ब्रेक लग जाएगा, जो हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, बस आई केप्ट रनिंग, वो शायद उसमें ब्रेक लग जाएगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो जब हम इस तरह से भागते रहते हैं, अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं, एंड वी डू नॉट सिट एंड थिंक कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, और शायद पूरी लाइफ ही ऐसे बीत जाती। नाउ अगेन ही सेज, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will. Once again he says, now I'll count. उसने समझा दिया कि why he wants us to keep quiet, है ना? कि man has to sit together without uttering a word, without moving. तो वो एक जो moment होगा, that will be very exotic, very strange, very wonderful. Man will not harm anybody, and he will sit and think about himself, है ना? इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अपनी गलतियों को रियलाइज करेगा, और शायद लाइफ का एक न्यू मीनिंग उनको समझ आ जाएगा, है ना? पॉसिबिलिटी है ना बेटा? यस। सो इंट्रोस्पेक्शन इज रियली वेरी गुड। आप
कभी भी आप सोच ट्राई करके देखना, आपकी किसी से कोई बात हो जाए और आप लेटर ऑन सिट साइलेंटली एंड थिंक ओवर इट कि क्या हुआ आज, है ना? तो यू विल रियलाइज डेफिनेटली कि शायद मेरी ही गलती रही। So this is what the poet wants us to search our soul. Ki what I want from my life, I really do not know. So all men on earth, all human beings on earth have to introspect and retrospect at the same time what they want from their life, what wrong they have done, they should realize. I hope the poem is clear to all of you. Yes, now what is the rhyme scheme of this poem? Did you notice that there is no rhyming in this poem? See, I give you the example of this last paragraph. First line ends as about, then minded, then moving, nothing, silence, sadness, ourselves with. So कोई भी word तो rhyming नहीं है. सो अगर मैं आपसे राइम स्कीम पूछूं तो यू हैव टू सी द लास्ट वर्ड कि कौन सा वर्ड राइम करता है. क्या कोई फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन राइम कर रही है? क्या फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन राइम कर रही है? कोई कर ही नहीं रही. तो इट्स अ फ्री वर्स. तो जब कोई लाइन राइम ना करे तो राइम स्कीम क्या होती है? इट्स अ फ्री वर्स. ओके, नाउ देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. वैसे तो पोएम इज वेरी सिंपल, very simple words the poet has used, but still I would like to clarify a few of these words. For once, he said, for once, for one single time, he says, try it. है ना? Exotic, unusual, strange, wonderful, no survivors. सर्वाइवर्स कौन होता है? जीने जिंदे लोग. तो जो हारा वो भी नहीं बचा, जो जीते वो भी नहीं बचे, है ना? engines, factories, vehicles, इनके लिए यूज किया पोएट ने. interrupt, break, threatening ourselves, अपने आप को ही हम नुकसान पहुंचाते हैं, self destruction. now let's see some poetic devices in the poem. अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कुछ पोएटिक डिवाइसेस ऐसे हैं कि जो ऑलमोस्ट हर पोएम में रिपीट होती रहती हैं, राइट? सो एलिट्रेशन इज वन ऑफ देम. नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? आई एम गोइंग टू आस्क यू बिकॉज इन द लास्ट टू पोएम्स आल्सो एलिट्रेशन था, राइट? Alliteration is what? It's a repetition of a consonant sound at the beginning of two words, or it can be more than two words. And those words should come to one after another, consecutive words, right? So I have taken few examples, but there are more, and I would like you to try find out those alliterations, right? Let us we will count. पोएट ने कहा था ना, we will count up to 12. We will all keep silent. We would all be. Sudden strangeness. See carefully. W, we. Then again, we. Consonant sound देखिए. Sudden strangeness. S. Then harm, wails. Then what I want. His hurt hands. ये देखिए. Last example has 3 consonant sounds, consecutive words. His hurt hands. Right? So this is alliteration. I am sure that now the alliteration is clear to all of you. Right? The next poetic device is repetition. Repetition is when the same word is repeated in a line. एक ही वर्ड को 2 बार यूज किया हो पोएट ने, या 2 से ज्यादा बार भी यूज कर सकता है, राइट? नाउ I have taken 2 examples, but there are more in the poem, so you have to find them out and do as assignment, right? Without rush, without engines. So without word, repeat word. Wars with gas, wars with fire. कौन सा word repeat हुआ? Yes, good, wars. Now the next poetic device is personification. Now personification, when animals or
नॉन लिविंग थिंग्स, किसी भी, देखिए ना, ही और शी, दे, देम, हम किन के लिए यूज करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के। लेकिन जब हम किसी और चीज को अदर देन ह्यूमन बीइंग्स को एज पर्सन हम करते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। Perhaps earth can teach us. Now earth को as a person use किया poet ने, right? So here is earth has been personified, right? Yes. So the poem is clear to all of you? Good. Now we move on to multiple choice questions. I always stress on these questions because this year onwards we'll be having many multiple choice questions. Okay, so my favorite question, you all know, what is this going to be? Name the poem and the poet. थोड़ा सा टाइपिंग एरर में इधर उधर हो गया है तो प्लीज आप, बट यू कैन स्टिल रीड इट. Option A says Keeping Quiet by Stephen Spender. Option B says Keeping Quiet by Andrine Rich. Option C says Keeping Quiet by Pablo Neruda. Option D says Aunt Jennifer's Tigers by Andrine Rich. Now, you all know the right answer. I'm not going to tell you this time. Okay, let's move on to question number 2. If we were not so single minded, what does we refer to? अब इस लाइन में वी क्या कहता है, किसको रेफर कर रहा है? पूरी पोएम में पोएट किन के बारे में बात कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स के बारे में. सो वी कौन है? एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रिवर्स हैं, या ह्यूमन बीइंग्स हैं? अनडाउटेडली ह्यूमन बीइंग्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्स अस, मैन हैज टू लर्न अ लेसन फ्रॉम. अभी 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 हमने किया था. From whom man has to learn the lesson? Yes. Option B, Earth. Earth से ही तो हमको lesson सीखना है ना, इस poem के accordingly, right? Other options are moon, the sun, the stars. So, Earth is the correct answer. Question number 4. Poet says that the wars that are fought have, याद कीजिए, अभी हमने उसमें भी पढ़ा है, पोएटिक डिवाइसेस में भी, जब हम डिफिकल्ट मीनिंग्स वर्ड्स विद द मीनिंग्स कर रहे थे, देन आल्सो वी वेंट थ्रू दिस वर्ड. पोएट सेज दैट द वॉर्स दैट आर फॉट हैव नो डैश, देखिए, सर्वाइवर्स, सोल्जर्स, आर्म्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स. So this time you have to give the answer. I have made clear. Question number 5 is without rush, without engines refers to what? No running, no vacations, no traveling, no noise. भागना नहीं, engines, vehicles की आवाज नहीं. So the right option is yes, no noise. Very nice. Question number 6 is the poet wants the humanity to, what does he want? बार बार उसने हमसे क्या कहा? Keep running, keep smiling, keep walking, keep still. So I know you all know the answer, and the right answer is keep still. Fishermen in the sea would not harm what? Whales, frogs, turtles, none of these. Word use किया था, very clearly the poet has used this word. Yes, I can see the right answers. Very nice. Whales is the correct answer. Now the next MCQ asks us, it would be an exotic moment. What does exotic refer to? Yes. Terrible, painful, memorable, strange, and peaceful. Yes, I can make out through your faces, and the correct answer is strange and peaceful. Question number 9 asks us, what does the nature teach humans?
क्या सिखाती है नेचर हम सबको? To work with silence, to make noise, to not worry, none of these. क्या सिखाती है नेचर? टू वर्क साइलेंटली. हमने देखा ना नेचर कैसे साइलेंटली रीबर्थ होता रहता है नेचर में. तो दैट इज व्हाट नेचर टीचेस अस. Now there is an assignment for all of you. Very simple, 3 questions I have given, and try to do them. What does the keeping quiet poem sorry what does the poem keeping quiet teach us? तो एक तरह से थीम है पोएम का, क्या हमें सिखाती है कीपिंग क्वाइट पोएम. So try to do it. If you go through the summary or once again through the overview of the poem, you are going to get the answer. What is the exotic moment the poet wishes for? अब इस exotic moment के बारे में तो we have talked a lot, right? What does Pablo Neruda want to convey? Life is what it is about. है ना? Life has to move on. We cannot stop anywhere, right? He wants us to move on, but keep analyzing, keep introspecting, keep retrospecting, right? So these are the questions. I'm sure you all have understood the poem, right? So you all have understood. Just post comments quickly so that I know that you all have understood, right? This matter, all this overview of the poem and the questions and the poetic devices, whatever we have gone through, you'll find them in the description box. And try to do all these MCQs. And if you can write down the summary, please try to write it down so that you can have a glance of it whenever you want to have it, right? So this is all for today. And what you all have to do is you have to like the channel. See, this is very important. And those who have not subscribed, they have to subscribe to my channel, because you will keep on getting all the notifications whenever we are going to have a new lesson or a new topic. You will all get a notification. So this is all for today from English and your coach Nirupma Gupta. Good night.